Religion in India has always been deeply ingrained in the life of Indians. As soon as a child is born, they are bestowed with a religion, which influences how they are expected to live their entire life, right up to the last rites. Religion can add a beautiful layer to social life through rituals and festivals which have been passed through the ages, and most of them are generally known to bring people together. But some others, not so much. Hindus before marriage often get their faiths or kundlis checked to see if the marriage will be an astrologically good match. यदि किसी जातक की कुंडली में ये दर्शाता है कि वह उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उसका अर्थ है कि उसकी कुंडली में शादी संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए पंडित जी भविष्यवाणी करते हैं कि इसकी कुंडलियों में इस तरह दोष हो सकते हैं, इसलिए इस दोष के कारण क्या है, उसकी शादी में रुकावट के कारण तरीन तलाक हो सकते हैं या शादी टूट सकती है। इसके लिए दुल्हन की कुंडली में कुंभ विवाह करने का विधान बनाया गया है। कुंभ विवाह करने से उसकी कुंभ विवाह एक मिट्टी के पात्र से करा जाता है, फिर उसको बहते हुए पानी में उसे विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी ये पहली शादी मानी जाती है। आगे उसकी जिंदगी लाइफ शादी है वो अच्छी तरह व्यतीत होए, इसके लिए ये काम किया जाता है। Timati is a festival which is both strange and terrifying. Usually celebrated a week before Diwali in rural parts of Tamil Nadu. This festival tests the limits of human strength by asking devotees to walk over a bed of fire to prove their purity. This festival traces back to a Hindu epic, the Mahabharata, which is a story about the fight between two groups of cousins, the Pandavas and the Kauravas. As per the epic, the Pandavas had lost their land, wealth, and even their wife Draupadi to the Kauravas in a game of dice. Ridiculous as it may seem, after the great Mahabharata war, Draupadi had to walk through fire and emerge unharmed, which according to the legends, somehow she managed to do. कि अपने हृदय और आत्मा की पवित्रता के कारण इस चमत्कारी कार्यों को करने में सक्षम थी। ऐसा होता कि भगवान उसकी अध्यक्षता करते, इसलिए उसे सांसारिक खतरे से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमिलनाडु के निवासी अभी भी इस अनुष्ठान को करते आ रहे। देवी द्रौपदी के श्रद्धांजलि के रूप में स्वयं की रूप में शुद्धिकरण करने लिए अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस अनुष्ठान को करते हैं। A pit is dug roughly 2.7 meters in depth, which is filled with coal and then lit on fire. At the end of the pit, there is another hole with cold milk in it. The ritual starts with the chief priest or head of the village walking over the pit with a pot on his or her head, which is meant to symbolize the goddess Draupadi. Then the devotees follow one by one, taking turns walking over the pit to prove their pureness, and at the end, they cool their feet with the cold milk. As illogical as it may seem, this ritual has gotten a lot of attention and has spread to other parts of the world as well, in countries like Singapore and Sri Lanka. Hinduism heavily believes in the concept of reincarnation, and each rebirth is said to be based on the actions of your past life. So most Hindus try to stay pure and not commit any sins in their lives, which is why they avoid certain foods and things which they think can defile them. This also leads to them trying to please God and make themselves purer in any way they can, which is why Hinduism has some pretty bizarre rituals. But the Aghoris are different. The Aghoris go out of their way to challenge the fabrics of Hindu society. They have the belief that God lives within them, so nothing they can do can be considered unpure. And due to this belief, they have some extremely questionable rituals. अघोरी साधु ये आवश्यक नहीं है कि वो पवित्र ही रहें, वो पवित्रता के साथ अपमानजनक दर्शन को मान सकता है। समाज में वो व्याप्त रहते हैं, वे नित्य उनका निरपक्षी रहते हैं, वे रोज मदिरा का सेवन करते हैं, खुद मृतकों को डाक में रहते हैं, उनके साथ निवास करते हैं और कब्रिस्तान सोते हैं। और उसके अलावा अघोरी जो है वो समाज के लिए किसी प्रकार से दुखदायक
हानिकारक नहीं है, वो समाज के लिए अच्छे साबित हुए हैं और अघोरी पूरे भारत में मान्यता फैली हुई है। और वो वाराणसी में द अघोरी फाउंडेशन नाम से भी इनका फाउंडेशन चल रहा है और इनका उपयोग शिक्षाओं में समाज के कल्याण में लाभ के लिए किया जा रहा है।